Welcome students once more. Let's do some more idioms. Student, in my previous video I told you that building vocabulary is a continuous effort. Vocabulary को improve करना, vocabulary बढ़ाना एक continuous process होता है. It takes a lot of time to improve vocabulary. So I told you to read your text very carefully. आपकी जो टेक्स्ट बुक्स 9th, 10th, 11th, 12th या कॉलेजेस के अंदर लगी हुई है, जो आप पढ़ रहे हैं, उनको बड़े ध्यान से पढ़िए. कुछ जो आपके इडियम्स आपके प्रीवियस क्लास की बुक्स के अंदर आए हैं, उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं नई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले. जैसे एन अप्रोर जो इडियम है, ये भी आ चुका है आपके सिलेबस के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर आया हुआ है. इट्स मीनिंग इज टू मच नॉइज, शोर शराबा एंड अप्रोर. ऐसे ही बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये आपका इडियम है वो द थीव स्टोरी के अंदर आया हुआ है, जो कि 10th क्लास के अंदर लगी हुई है. इट मीन्स टू अर्न इन इरेगुलरली. ठीक है, जो व्यक्ति पैसा लगातार नहीं कमाता उसको फिट्स एंड स्टार्स बोलते हैं. ऐसे ही आपका एक इडियम आया हुआ है जो कि ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड 9th क्लास का चैप्टर है, एन एले अगेंस्ट फिलिस्तीन. ओके, इट मीन्स ए वुमेन who does not take interest in literature and music. Okay, similarly one more idiom is there from class 9th book, break out in cold sweat. Okay, it means to be anxious or in a state of extreme worry. Okay, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाना इसका मीनिंग होता है. तो स्टूडेंट, whenever you are reading your books, text books particularly, read your books very very carefully. Keep your new words in your mind. Okay, this will help you to build your vocabulary. Now let's start next idiom of 25 idioms we have already done in my previous video. Now 26. Castle in the air, or to make castle in the air. Okay, हवाई किले बनाना इसका हिंदी में मीनिंग होता है. आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज romantic design, B is perfect plan, C is ideal projects, and D is visionary projects. Okay, here right answer is D, visionary projects. Here D is the right answer. Now 27th, to blow hot and cold. First option is changing weather, B option is to be truthworthy, C option is to be inconsistent, and D is to be rich and poor frequently. Okay, here to blow hot and cold means to be inconsistent. C is the right answer here. Okay, C is the right answer here. Now next is to see eye to eye with. Okay, आंख से आंख मिलाना. टू एग्री, बी इज टू स्टेट फिक्सिडली, सी इज टू बी एंग्री, एंड डी इज टू टेक रिवेंज. हेयर इन 28th, ए इज द राइट आंसर, टू एग्री. ओके, किसी की आंख से आंख मिलाने का मतलब सहमत हो जाना. नेक्स्ट 26th इज टू पुश somebody to the wall. ओके, टू पुश somebody to the wall. First option A is to defeat him, second is to humiliate him, C is to heckle him, and D is to knock down. Okay, here in 29th, A is the right answer. किसी को दीवार की तरफ पुश कर देने का मतलब होता है to defeat him. To defeat him, किसी को पराजित कर देना. Now 30th, the pros and cons. Okay, here first option is for and against a thing, second is fair or foul, C is good and evil, D is former and later. Okay,
here 30th answer is A, for and against a thing. Okay, it means to know merits and demerits of a person or a situation. 31st, to give one a long rope. Okay, first option is to speak ill of, B is to get into trouble, C is to dismiss, and D is to allow a man to continue his mistakes or crimes. So here in 31st, D is the right answer, to allow a man to continue his mistakes and crime. किसी व्यक्ति को अपनी मिस्टेक्स और अपने अपराध हैं वो जारी रखने के लिए जारी रखने देना. नाउ 32, बाय फेयर मीन्स और फाउल. ओके, बाय फेयर मीन्स और फाउल. ओके, बाय हुक और क्रुक मेथड, ये भी इसका मीनिंग होता है. क्या है? विदाउट यूजिंग कॉमन सेंस. बी इज डिफिकल्ट, विदाउट डिफिकल्टी. थर्ड इज इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट. डी इज हैविंग बीन investigated. Okay, C is the right answer here. In any way honest or dishonest, किसी काम को किसी भी तरीके से करना, ओके, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको बोलते हैं बाय फेयर मीन्स और फाउल. नाउ नेक्स्ट 33rd, टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर. ओके, first option is to foment trouble, B option is to add to the trouble, C option is to instigate, and D option is to claim a quarrel soothing words. Here right answer is C, to instigate means to settle a dispute. कोई dispute है वो set कर देना, इसको बोलते हैं to pour oil in troubled water. Now 34th, at one's beck and call. Okay, first option is, A option is enjoying oneself without caring for others. B is to be always at one's service. C is to be under one's subjugation, and D is to be in an adventurous position. Here is the right answer, टू बी ऑलवेज एट वंस सर्विस. किसी को एक प्रकार से किसी की हेल्प के लिए हमेशा ही तैयार रहना. नाउ 35th, टू ब्रेक द आइस. ओके, टू ब्रेक द आइस, ए ऑप्शन इज टू स्टार्ट क्वारलिंग, बी इज टू एंड द हॉस्टिलिटी, सी इज टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, एंड डी इज टू एंड अप पार्टनरशिप. ओके, टू ब्रेक द आइस, इसका हिंदी में मीनिंग होता है चुप्पी तोड़ना. तो हियर सी इज द राइट आंसर, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन. नेक्स्ट इज 36th, टू टेक somebody फॉर ए राइड. ए ऑप्शन इज टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, बी इज टू कीप कंपनी, सी इज टू डिसीव और ह्यूमिलेट हिम, मतलब किसी को धोखा देना, एंड डी इज टू एक्सप्लॉइट ए पर्सन. Here B option is the right answer. To take somebody for a ride means to keep company. Now 37th, by the rule of thumb. Okay, thumb अंगूठा होता है. By the rule of thumb, answers are, options are, A is by the use of force, B is by the use of trickery, C is by cheating and deception, किसी को धोखा देना, and D is by practical experience which is rather rough. Here right answer is D. By the rule of thumb means by practical experience which is rather rough. Now 38th, to pay back in the same coin. Okay, option A is to give a word of praise to another, B is to retaliate, and C is to provoke one to quarrel, D is to offer another polite attention. Okay, here B is the right answer, to
पे बैक इन द सेम कॉइन मीन्स किसी के दुर्व्यवहार का जवाब कटु व्यवहार से देना. बी इज द राइट आंसर हेयर. Now 39th, to frame a person. Okay, A option is to befool someone, B option is to make one appear guilty, C is to praise someone, and D is a narrow escape. Okay, narrow escape बाल बाल बचना होता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता. Here in the 39th question, to make one appear guilty. Okay, B is the right answer here. Now next, to cross swords. Okay, swords तलवारें होती हैं. To cross swords, A option is to fight, B option is to defend, C option is to kill, and D option is to rob. Okay, here swords to cross swords means to fight, लड़ाई कर. Now next 41st is to lose one head. Okay, to lose one head, A option is to go mad, B option is to become nervous, C option is to become confused and overexcited, and D option is to lose the balance. Here in 41st, C option is the right answer. Okay, C is the right answer, to become confused and overexcited. Now 42nd, a chip of the old block. Okay, a chip of the old block. Option 1 is a piece of wood, B option is an old friend, C is characteristics of one's ancestors. Ancestors पूर्वज होते हैं, and D option is a good bargain. Okay, bargaining करना आप जानते होंगे, मोल भाव करना. Here in 42nd, C is the correct answer, characteristics of one's ancestor. पूर्वजों का, ओके, पूर्वजों के ऊपर जाना होता है, इसका मीनिंग. Now 43rd, to take the word out of one's mouth. First option is to criticize someone, second option is to not to allow someone to express freely, C is to praise someone, and D is to anticipate what a person is about to say. Okay, to take the word out of one's mouth का मतलब होता है कि किसी के मुंह से बात को छीन लेना, मीन्स जो वो बात कह रहा हो उसी को ही कह देना. तो here D is the right answer, to anticipate what a person is about to say. Now 44th, hit the nail on the head. Okay, नाखून को सिर पर मारना. A option is say the right things, B is give someone very harsh punishment, C option is make a man unconscious, and D is do the wrong thing. Okay, do the wrong thing. Here A is the right answer, say the right thing. Okay, say the right thing is the right answer, A is the right answer. Now 45th, to bell the cat. Okay, to bell the cat, first option is drive away bad person, B is to decorate a cat with a griddle, C is do the most dangerous part of a job, and D is to tease a quarrelsome woman by laughing at her. Okay, tease करना, चिढ़ाना होता है किसी औरत, किसी झगड़ालू औरत को एक प्रकार से टीज करना, उसको चिढ़ाना, उसके ऊपर हंसते हुए. तो हेयर टू बेल द कैट का मतलब होता है बिल्ली के सिर में घंटी बांधना, बिल्ली को घंटी बांधना. तो हेयर आवर राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर. ओके, सी है वो हमारा राइट आंसर होगा. नाउ 46th, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स. ये भी बहुत फेमस इडियम है. क्या है? टू वीप बिटरली एंड लॉन्ग. बी ऑप्शन इज टू एक्सप्रेस सोरो विच अपीयर डीप बट इन नॉट रियल.
C is to behave like a cunning person, and D is to deceive by tales of misfortune. Here, B is the right answer, to express sorrows which appear deep but in not real. Okay, मगरमच्छ के आंसू बहाना, इसका मतलब होता है कि ऊपर से कोई ढोंग करना. Now 47th, make both ends meet. फर्स्ट ऑप्शन इज टाई दी ब्राइड्स क्लॉथ टू bridegrooms. ठीक है, दुल्हन का कपड़ा है वो दूल्हे के साथ बांधना. या बी इज spend carefully and live within one's income. C is do justice and show mercy. And D is construct a bridge. Here C option is do justice and show mercy, and D option is construct a bridge. Okay, construct a bridge का meaning पुल बनाना होता है. Here in 47th, B is the right answer. Spend carefully and live within one's income. Okay, to make both ends meet means spend carefully and live within one's income. Now last is a man of straw. Okay, a man of straw, first option is Scarecrow. Okay, B is a man who cannot be relied upon, वो व्यक्ति जिस पर भरोसा ना किया जा सके. C is a boastful man, डींगे मारने वाला व्यक्ति. एंड D is a man of no substance. Here in 48th, D is the right answer. A man, okay, a man of no substance, दो ढीले का भी जो व्यक्ति नहीं होता उसको a man of no substance बोलते हैं. Okay, in 47th, B is the right answer, and in 48th, D is the right answer. So student, I have discussed about 48 different idioms. If you have not watched my first video, you can watch it. It is available on my YouTube channel, Easy English NCERT Learning with Chandrapal. In coming days also, I will make more videos on idioms, one word substitute, synonyms to build your vocabulary. Thank you so much for watching my videos and have a nice day.